Okay, look here, the first formula. What is current ratio? Under the current ratio, we are included क्या लेने वाले? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी एंड रफ इट। तो करंट असेट के अंदर क्या आने वाला है? जो करंट असेट अपने वर्टिकल फॉर्म में जो करंट असेट में हम लोग लिया करते थे फ्रॉम ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, तो करंट असेट में जाता है तो वो आएगा। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है? 1,96,770 इट इज इन्वेंट्री प्लस नेक्स्ट वन देखो क्या है इन्वेंट्री के बाद डेटर्स आल्सो करंट असेट है 203,942 इट मींस 2,03,942 2,03,942 ओके। देन नेक्स्ट इज उसके बाद क्या देखो डेटर्स के बाद बैंक बैलेंस, यू नो बैंक बैलेंस 1,21,280 1,21,280 it's a bank balance. Okay, then next one is advance, it means prepaid. Okay, also current asset में आने वाले कितना advance है? 23,675 okay, it's the total number of your current asset divided by current liability. अब current liability में क्या आने वाला है? देखो current liability में क्या मेंशन करना है अपने को? तो वन बाय वन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आने वाला है? तो लुक हियर, तो लायबिलिटी साइड ओके, जो करंट पीरियड के लिए होता है शॉर्ट पीरियड, शेयर करंट पीरियड के लिए होता है नहीं, कंपनी खत्म होने तक शेयर यूज होने वाले लॉन्ग पीरियड के लिए, रिजर्व लॉन्ग पीरियड के लिए, देन डिवेंचर लॉन्ग पीरियड के लिए, वन ईयर के लिए कोई डिवेंचर नहीं होता, 5 ईयर 10 ईयर नॉट, तो रिमेनिंग आर ओके। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, या सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या है? 83,900 means 83,900 plus proposed dividend 65,000 plus short term loan it is 25,000 okay। then the answer is, देखो आंसर क्या आता है? हम इसका आंसर निकालने वाले हैं, तो प्लस कैलकुलेटर पे इसका टोटल करेंगे जल्दी। द टोटल इज 1,96,770 प्लस 2,03,942 plus 1,21,280 1,21,280 plus 23,675 23,675 it's become 5 lakh कितनी हुई टोटल मालूम? 5,45,667 okay। then total of current liability it's become कितनी है? देखो 83,900 plus 65,000 plus 25,000 it's become 1,73,900 okay। then the answer is, आंसर देखो कितना आता है? 5,45,675 5,45,667 divided by 1,7390 it's become sorry 5,45,675
45,667 divided by 1,73,900. It's become 3.13 is to 1. 3.13 is to 1. Okay. The answer is 3.13 is to 1. Okay. It means the current asset is 3.13. Time of current liability is 1. Okay. Then the next formula is quick or liquid liability. इसका formula देखिए क्या है? The formula is quick asset upon quick liability. Formula is quick assets upon quick liability. अब time of quick asset and quick liability. तो quick asset का formula क्या बोला हुआ है? Current asset, the total amount of current asset quick asset की amount क्या लेनी है हमें? Total amount of current asset, which is अगर यहाँ मिल चुकी है 5,45,667. 5 lakh. I'm mentioning here 5,45,667 minus into bracket 667. अब इसमें से क्या कट होने वाला है? स्टॉक एंड प्रीपेड. स्टॉक की अमाउंट नहीं लेनी है, तो स्टॉक की अमाउंट क्या है? देखो यहाँ पे इन्वेंट्री इट मींस स्टॉक 1,96,770. 1,96,770 प्लस और कौन सी अमाउंट नहीं लेनी है? प्रीपेड यानी एडवांस की. एडवांस टैक्स है यहाँ पे 23,675. 23,675 bracket complete. The look here, the amount 1,96,770. It means stock. It means stock or inventory plus and prepaid. It means advance 23,675. These are deducted from your current asset. It's become quick asset. It's become quick asset. Then quick liability के लिए formula क्या बोला हुआ है इसने? क्विक लाइबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या बोला हुआ है उसने? करंट असेट क्या बोला हुआ उसने? करंट असेट. अब टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट 1,73,900 माइनस इसके आगे उसने क्या बोला हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग आर नॉट इंक्लूडेड. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट. ओके, तो बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए देती है. तो शॉर्ट टर्म लोन है 25,000. It is not included here. And outstanding. अब outstanding यहाँ कुछ भी नहीं है, तो just 25,000 यहाँ से लेस होगा. Okay. Then the calculation of this formulatic system. हमें जो आंसर आने वाला है, अब मैं आंसर डायरेक्टली यहाँ मेंशन करता हूँ. Like 5,45,675. 45,667. 5,45,667 minus 1,96,770. 1,96,770 minus 23,675. It's become 3,25,000. It's become इनकी टोटल हुई है 3,25,222. ओके, एंड हियर की टोटल कितनी हुई है? देखो 1,73,900 minus 25,000. 1,73,900 minus 25,000. It's become 1,48,000. 1,48,900. Okay, then the answer is 3,25,222 divided by 1,48,900.
900. It's become 2.1 is to, it's become, answer is 2.18 is to 1 is to 1. रेशियो इसलिए इसे इस तरह लिखा जाता है, यानी जो आंसर आएगा उसके आगे is to 1 लगाना है। इसलिए यहाँ आंसर आएगा 3.31. ओके, यहाँ आंसर आएगा 3.13 is to 1, यहाँ 2.18 is to 1. ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्विक एसेट कैसे लिया था अपन ने? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, करंट एसेट स्टॉक माइनस प्रीपेड। ओके, चाहे तो मैं ये यहाँ से कट करके I mention here. Quick asset का formula, then from this is solution. Okay, the answer is 2.81 is to 1. Then debt equity ratio, calculation of debt equity ratio के लिए क्या बोला हुआ है इसमें? Long term debt, so क्या बोला है? Mention long term debt, it means loan, all types of loan. तो here long term debt देखो कितना है, लोन कितने? डिबेंचर है only 5% डिबेंचर, 1,57,500 mention here, 1,57,500. Okay, then shareholder fund, it means share capital. अब डायरेक्टली मैं लेने की कोशिश करता हूँ, इससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएंगी। शेयर कैपिटल 6,50,000 प्लस रिजर्व। अब रिजर्व देखो क्या है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्लस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इन सब की रिजर्व की टोटल है 8,15,410, 8,15,410, 8,15,410। किस किस की टोटल है? किस किस की टोटल है पता है? द टोटल इज शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओके, और आउट ऑफ दैट फिक्टिशियस एसेट को लेस किया जाता है, लेस फिक्टिशियस एसेट 1550, 1550, 8,13,000, the total amount is 8,13,860. Okay, the answer is, या डायरेक्टली इसके आगे ही मैं आंसर लिखता हूं, the answer is 1,57,500 divided by 8,13,860. It's become 0.19. 0.19. अब डेट इक्विटी रेशियो 0.19 आया, इसको तुम्हें if you want then it's converted into also in percent, into 100 करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 19 पॉइंट। तो इसको भी तुम लोग चाहिए तो बाद में it's converted into percent, then it's become 19%. रेशियो है तो उसको परसेंट में भी ले सकते हो। इफ यू नॉट गॉट तो नेवर मल्टीप्लाई बाय 100. बोथ आर द 0.19 और 19%, बोथ आंसर आर परफेक्टली करेक्ट. ओके, फुल्ली करेक्ट. देन स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल. द फॉर्मूला इज स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल. अब स्टॉक कितना है? इट मींस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है अपनी? लुक हियर, फर्स्ट टाइम 1,96,770. 1,96,770 is your stock. अब वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या उसने बोला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बोथ आर द टोटल इज हियर. अपने फर्स्ट फॉर्मूले में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की टोटल मिली हुई. करंट एसेट कितने? डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी.
5,45,667, 5 लाख। मैं डायरेक्ट वहां पे एक बार लिखता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। करंट असेट कितना है? 5,45,000, 5,45,661, 665 क्या था वो? 667, 5,45,667 माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,73,900, 1,73,900। It's become 5,45,000 5,45,667 minus 1,73,900 is become 3,71,767. 3,71,767. Okay, and the solution, the perfect answer is stock upon working capital कितना आएगा? देखो स्टॉक कितना है? 1,96,770 minus divided by 3,71,767. It's become 0.52. 0.52. 0.52. If you want is like this, ऐसा भी यूज कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई बाय, अगर तुम्हें पॉइंट में लिखना पसंद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 100. Okay, it means also answer multiply by 100. It's become 52%. 52% कितना आएगा? 52% आएगा। 52% आएगा। 52% कब आया? अगर इंटू 100 नहीं करेंगे तो जस्ट 0.52 आएगा। अगर इंटू 100 करेंगे तो 52% आएगा। परसेंट मीन्स इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स परसेंट. Okay, then the next formula, proprietor ratio. Proprietor ratio, it means proprietor fund upon total asset. It means proprietor fund upon total asset. अभी proprietor fund यानी क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, है ना? ओन फंड प्लस लोन फंड इज प्रोप्राइटर फंड, यानी यहाँ तक की टोटल, यहाँ तक की टोटल। अब जैसे कि 6,50,000 प्लस 2,500 क्या है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्लस 1,20,410 ये जनरल रिजर्व है, प्लस 42,500 ये क्या है? 42,500 अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्लस 33,777 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, प्लस लोन फंड कितना है? 1,57,500 माइनस फिक्टिशियस असेट कितने? 1,550. इट्स बिकम द अमाउंट इज 1,10,05,137. अमाउंट बिकम, अमाउंट कितनी आई प्रोप्राइटर फंड की? 10,10,05,137. इट बिकम 10,05,137. 10,05,137. अब ये कैसे आई है? अगर इसमें कुछ डाउट है आई मेंशन हियर, फिर से ये फॉर्मूला में मेंशन करता हूँ. $1,57,500. यहाँ क्या क्या आने वाला है?
ओन फंड प्लस लोन फंड। अभी ओन फंड में क्या आने वाला है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल देखो क्या है, शेयर कैपिटल 6,50,000। ओके, मेंशन हियर 6,50,000 प्लस रिजर्व, capital reserve 2,500, capital reserve 2,500 प्लस इसके बाद क्या आने वाला है देखो, जनरल रिजर्व 1,20,410, 1,20,410, it is your general reserve. Then DRR, debenture redemption reserve 42,500 प्लस 42,500 DRR प्लस, और इसके बाद क्या आने वाला है, और कोई कुछ आ सकते हैं क्या देखो वहां से, PNL 33,777, 33,777। ओके, प्लस इसमें लोन भी आएंगे। लोन क्यों आएंगे, बिकॉज लोन इज मेंशन दैट, बिकॉज हम यहाँ एम्प्लॉय फंड निकाल रहे हैं। तो एम्प्लॉय फंड यानी काम के लिए इस्तेमाल होने वाला फंड, एम्प्लॉय वर्क के लिए, तो वर्क के लिए ओन फंड प्लस लोन फंड। ओके, तो पीएनएल के बाद 5% डिबेंचर्स 1,57,500 थे, 1,57,500। ओके, और इसमें से चाहिए तो चाहिए नहीं, फिक्स ही, माइनस फिक्टिशियस एसेट, इसमें से क्या होने वाला है, लेस होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे एक ही है फिक्टिशियस एसेट, जिसकी अमाउंट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,550, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,550। द टोटल इज 10,05,137 अंडर टोटल असेट। अब टोटल असेट के लिए तुम्हें इतना कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इतना लिखते नहीं बैठना है। टोटल असेट बैलेंस शीट के असेट साइड की या लाइबिलिटी साइड की टोटल होती है 11,80,587, 11,80,587, ओके, यही अमाउंट यहाँ मेंशन होगी 11,80,587। ओके, देन द आंसर इज, आंसर देखो निकालते हैं 11,80,587 is become 0.85%, 0.85, okay, 0.85. If you multiply by 100, if you multiply by 100, it's become in percent. It become in percent. It is 85%. Okay. Here your balance sheet ratios. First problem are covered. From next lecture, minimum 2 problem are covered because 5 formula तुम्हाला समजून जायचं आहे. जस्ट बॅलन्स शीट येणार आहे, त्या बॅलन्स शीट मध्ये जे काय येणार आहे ते आधीच आपण इन्कम स्टेटमेंट वगैरे बनवताना आपल्याला ते पाठ झाले. जस्ट आपल्याला फॉर्म्युलेच्या हिशोबाने त्या अमाऊंट इथून पुट करायचे आहेत आणि ते इथे मेन्शन करायचे आणि त्यांची टोटलच्या हिशोबाने रेशो करायचे. करंट रेशो, क्विक रेशो पर्यंत तुम्ही 1:1 हा रेशो फॉर्म लिहिलेला चालेल. and from that debt equity ratio, then stock turnover ratio and proprietor ratio, long listing ratio त्यांना पर्सेंट मध्ये शो करण्याचा प्रयत्न करा. in clear and best form. Okay, here the 5 formula, each formula for 2 marks, 10 mark problem. Okay, yeah, the 5 formula for you, it is balance sheet ratio. Any doubts in this lecture, please contact me. and further हे फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे, थोडक्यात टफ गेला असेल, आणखी 2-3 याच्यातले प्रॉब्लेम होणार आहे. त्यानंतर आपण प्रॉफिट अँड लॉस रेशो, इन्कम स्टेटमेंट रेशो बघणार आहोत. तेव्हा लवकर गडबडून जाऊ नका. काय जमतोय की जमत नाहीये, सर पास जात आहे, त्याच्यावर काय इश्यू असेल तर कॉन्टॅक्ट मी डायरेक्ट बोलतोय, कॉन्टॅक्ट मी तुम्हाला ते सांगेन. आणि बस फॉर्म्युले आधी पाठ करून घ्या. ओके, ऑल ऑफ यू, थँक्यू. Quick ratio.
like this. Okay, मी one by one solve करायला घेतो. Just I started to solve. So first find out A company's current ratio find करणार आहोत आपण. The formula is current asset. Current asset क्या आहे बघा. The time of current asset आपण काय काय घेणार आहोत. Which one particulars are used? The time of current asset, which one is current time of movement मध्ये जे असणार आहे ते. For example, here stock, debtors and cash. The A company stock is 90,000 plus A company debtor is 25,000 plus A company cash is 10,000. Okay, miscellaneous expenses is not included here because the miscellaneous expenses is also known as fictitious asset, and fictitious asset आपण कुठे use करतो. Time of own fund. Find out own fund. Share capital reserve minus shareholder fund, reserve surplus minus fictitious asset is your share own fund. Okay, it means हे इथे use होणार नाही आहे. It is miscellaneous expenses like ते shareholder किंवा liabilityचा पार्ट आहे इकडे आलाय. शेअर कॅपिटल वर होणारा एक्सपेंडिचर आहे. इट इज नॉट युअर करंट असेट. ओके, डिवाइडेड बाय इन न्यूमरेटर मध्ये काय येणार आहे. करंट liability. The amount of current liability is, how can you find out it? The current liability is equal to amount of current liability. There is liability side. Here the current liability is creditors from here. Creditors, outstanding wages and provision for tax. The amount mentioned here, creditors कितने 1,35,000 of A company. 1,35,000 plus outstanding 40,000 plus total provision for tax. It's here 60,000. It's here 60,000. Okay. Then the answer is directly we put on answer is total of current asset. Find out here. So mention here total of current asset 90,000, 1,25,000. Okay, 1,25,000. 90,000 plus 10,000, 1 lakh plus 20,000, 1,20,000. Okay, and here total of current liability. Please tell me the total of current liability. 2,35,000. 1,35,000 plus 40 plus 60. It is 2,35,000. Okay. Then the answer is 1,25,000 divided by 2,25,000. 2,35,000. It's become 0.53 is to 1. It's become 0.53 is to 1. Means here answer 0.53 divided by 1. It becomes 0.53. The ratio is 0.53 is to 1 for A company. Okay. Then for B company. Okay. For B company, the formula is same. Current asset upon current liability. Okay. Then mention the B company's current asset. Here stock is from here. The similar current asset for B company. That's similar for here. Here in current asset of B, 85,000 of stock. Okay. $85,000 का क्या है? Stock है plus. The next 45,000 debtors. 45,000. Sorry. 45,000 debtors plus 40,000 cash. 40,000 cash. Miscellaneous expenses is not included here. Why miscellaneous expenses is not included here?
because miscellaneous expenses is a fictitious asset, not a current asset or a fixed asset. It's a fictitious asset. A fictitious asset का format में हमने देखे, the fictitious asset less from own capital, not using current asset. Okay. Then what are the current liabilities here? The mentioned current liabilities. The first is creditors, 45,000 plus 50,000 outstanding. Okay, plus 90,000 provision for tax. It's become किती टोटल होतं बघा, 85 plus 45 plus 40 means 85, 1,70,000. 1,70,000 divided by, find out the total of current liability. 45 plus 50, 95 plus 90 is 1,85,000. Right now, 45,000 plus 40,000. Sorry, 45,000 plus 50,000 plus 90,000. It's become 1,85,000. 1,85,000. Okay, then the answer is 1,70,000 divided by 1,85,000. It's become to 0.91. 0.91 is to 1. Is to 1. Then look here. For the coming, what are the coming? B, sorry. Is better than A. B is better than A. In current ratio. Okay, B is better than A in current ratio. Okay, then similarly find out the current ratio then quick ratio. Okay, quick ratio. Okay, B is better than A. Okay, then find out quick ratio. What are the formula for quick ratio? Quick assets. Okay, and just copy this formula for your solution and mention here. Here for A, formula is quick asset upon quick liability. Okay, and as per the formulation of quick asset कैसा formula है? Current asset, total of current asset, which is for A total of current asset कितना है? 1,25,000. Okay. $1,25,000 minus into bracket stock and prepaid. Yeah, find out the stock and prepaid. Prepaid is not here. This stock is here. How much? 90,000. Stock is 90,000. Bracket completed. And for the quick liability,
Quick liability of A company 2,35,000. 2,35,000 minus ब्रैकेट कंप्लीटेड. क्या लेना है ब्रैकेट कंप्लीट करने के लिए? 2,35,000 minus what are the solution is for quick liability? Current liabilities. It means 2,35,000 for A minus bank overdraft and outstanding. So here the bank overdraft is not mentioned, but outstanding is there. Two outstanding is there: outstanding wages and proposed dividend. Proposed dividend या proposed tax, provision for tax always are outstanding because वो हम provision कर रहे थे देंगे, दिए नहीं है. It means also outstanding. You are provide कर रहे, provision कर रहे, it means judgment pass कर रहे कि it is done in future, but not done with here. अभी तक done नहीं हुआ है, उसको करना है. You doesn't work it. You want to done it in future, in next year. Okay, then it is outstanding. The year total outstanding is outstanding 40 plus 60 is one. Outstanding 40,000 for outstanding wages plus plus 60,000 of provision for tax. Both are outstanding. It means unpaid. Okay, then the answer is the total. Find out karo. The total 1,25,000 minus 90,000. 1,25,000 minus 90,000. It's become 35,000. It's become 35,000. Okay. Then here 2,35,000 minus 40,000 plus 60,000. It's become 1,35,000. It's become 1,35,000 because it's 2,35,000. Okay, 40 or 60, 1 lakh. Then it's become 1,35,000. Then the answer is 35,000 divided by 1,35,000. It's become 0.25 to 1. 0.25. Sorry, 0.25 is to 1. Okay, for A company. Then for B company, the formula is same. Quick asset upon quick liability. Okay, then here quick asset is current asset. The formula is current asset minus stock and prepaid. So find out the B company, what are the current asset? 1,70,000. Here is current asset of current asset का formula है, उसमें current asset हमने find it किया 1,70,000. Mention here it is 1,70,000. $1,70,000. Okay, minus अब इसमें माइनस क्या होने वाला है 1,70,000 से? स्टॉक एंड प्रीपेड. तो फाइंड आउट द स्टॉक एंड प्रीपेड ऑफ बी कंपनी. स्टॉक कितना है 85,000 एंड प्रीपेड नॉट प्रीपेड, जस्ट 85,000 उसमें से माइनस होने वाला है. ओके, देन इन बैलेंस शीट क्विक लायबिलिटी. व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर क्विक लायबिलिटी? क्विक लायबिलिटी फॉर current liability minus bank overdraft and outstanding. So current liability क्या है? 1,85,000 of B company. 1,85,000 of B company. Okay, minus outstanding कितना है देखो इसके ऊपर. The two types of outstanding, एक provision for tax 90,000 and outstanding wages 50,000. 90 plus 40. 90,000 plus 40,000. Okay, bracket complete. Solve this equation, and the equation solution is first total. Here total is 1,75,000 minus 85,000. 1,70,000 minus 85,000. It's become 85,000. It's become 85,000. Okay. Then liability. $1,85,000 minus 1,30,000. Okay, 1,30,000. How become 1,30,000? 90 plus 40,000. It's 40 or 4,000? 40,000. Okay, 90,000 plus 40,000.
Oh, sorry. Provision 50,000. Okay, 90,000 plus 50,000. Then here is 1,40,000. 1,40,000. 1,85,000 minus 1,40,000. It's become 45,000. It become 45,000. Okay, then answer is 85,000 divided by 45,000. It's become 1.88. 1.88 is to 1. It's to 1. Okay, then here a past comment also. The comment is similar that their comment also. B is better than A because we have 1.88, we have 0 in quick ratio. Quick ratio. Okay. Then find out the next debt equity ratio. The next is debt equity ratio. Okay. For A, और A क्या है उसने देखो बोला है लॉन्ग टर्म डेट. हाउ मच लॉन्ग टर्म डेट मींस द लोन फंड. always तुम्हें याद रखना है, always you rememberize long term debt is known as loan fund. It is loan fund. The find out the loan fund of A company. A company loan fund कितना है? Only the secure loan is here 12% debenture. It is 1 lakh. Okay, it is 1 lakh. And long term debt 1 lakh is mentioned here divided by shareholder fund. Divided by shareholder fund. So here shareholder fund is the main equation. In shareholder fund, it's become share capital. So how much is the share capital of a company? 4 lakh. Share capital 4 lakh. Okay. Plus reserve and surplus. It means all types of reserve. Here reserve, P&L and general reserve. Here two reserves here, 50 plus 20. How much? Two types of reserve, general reserve and profit and loss. Also reserve and surplus. So 70,000 is here total reserve of a company. 70,000 is total reserve of a company. Okay. Minus or less fictitious asset. Here the fictitious asset is 10,000. Fictitious asset, it means the assets generating time of issuing reserve and share capital. It means इनके ऊपर जो मलाई बनती है वो इसे वो लोग कंपनी में fictitious asset बोलते हैं. Okay, the fictitious asset, the how much amount? 10,000. Okay. Then the solution of this equation as per your formula. The first is long-term debt. How much amount of long-term debt? It is 1 lakh. Okay. And shareholder fund 40,000, 4 lakh plus 60,000. 70 minus 10, 4 lakh 60,000. Okay. 4 lakh 60,000. Okay. The total amount of shareholder fund. Shareholder, it means share, complete shareholder जो है उनको all type of money your business. तो रिजर्व भी उनके ही होते हैं और शेयर भी उनके ही होते हैं. इसलिए यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. And you just look on asset side, the minimum fictitious asset is there. If yes, then less from them. इसलिए मैंने 10,000 fictitious asset जो मुझे मिले asset side में वो मैंने less किया हो. Maximum time they are not showing that. कभी कभी बहुत कम time पे fictitious asset आते हैं, लेकिन if fictitious asset is there, then it is mostly affected on your solution. तो जरा के लिए तुम्हें mistake में डाल सकते हैं. तो fictitious asset की तरफ ध्यान देना है. The answer is 1 lakh divided by 4 lakh 60,000.
it is it is 0.21. It is 0.21, and also in last problem I'm explaining, also multiply by 100 is use here. Also multiply by 100 is use here. That's why also I'm here multiply 100, and that's become how much is here? 21%. 21%. Okay. If you are not multiply by 100, it is not wrong. तुम्ही जर 100 ने गुणाकार करून त्याला पर्सेंट मध्ये नाही कन्वर्ट केलं, just 0.25 लिहिलं, it is also right because it is also in ratio form. आणि जर तुम्ही गुणाकार करून त्याला पर्सेंट मध्ये आणलं, from debt equity ratio, here the liquid ratio आहे, just current asset and current liability, ह्यांना तुम्हाला पर्सेंट मध्ये आणायचं नाही आहे ना, असंच घ्यायचंय 0.25:1, 1.80:1, 0.91:1, 0.53:1. Okay, but from here, from the third, debt equity ratio, your stock turnover ratio, proprietor ratio is a long term security ratio. और पर लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है करंट या लॉन्ग, दो डिफरेंट है. लॉन्ग के लिए उनको परसेंट में काउंट करना नो इश्यू, हम काउंट कर सकते हैं. एज द करंट मूवमेंट के लिए तो उसको परसेंट नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो क्या 1-2 महीने के लिए होता है, तो उसका परसेंटाइल निकालेंगे, देन परसेंटाइल जज करेंगे, उसमें और एक महीना वेस्ट करने से पॉइंट ऑफ में लिया जाता है. ओके, for A company is 21%. For B company, the similar formula is here. Okay, long-term debt. How much is the long-term debt of B company? Long-term debt of B company. The long-term debt of B company is 1,50,000. Is 1,50,000. 1,50,000. Okay, and shareholder fund. Here the shareholder fund of B company. मैंने क्या बोला, शेयर होल्डर फंड में क्या आने वाला है? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व. तो शेयर कैपिटल पहले लेते 5 लाख. शेयर कैपिटल 5 लाख. प्लस जनरल रिजर्व की कितने थे वहां पे? फॉर बी 40,000. जनरल रिजर्व 40,000 plus profit and loss 60,000. Profit and loss 60,000 is my solution. But time of this calculation, you just look asset side, the miscellaneous expenses is there. If yes, then less from there. Then it's less from share capital. Then less from share capital. And the year miscellaneous expenses is 3,000. The calculation is long term debt कितना हुआ? 1,50,000. Okay, and shareholder fund 5 lakh plus 4 lakh plus 6 lakh. 5 lakhs plus 40,000 plus 60,000. It becomes 6 lakh minus 3,000. 6 lakh minus 3,000. How much? 5,97,000. 5,97,000. Okay, and then I'm saying you multiply by 100. Also here, if you want to use into 100. Okay, multiply by 100. Okay. Then the answer is 1,50,000 divided by 5,97,000. It's become 0.25%. 0.25%. 0.25%. Sorry, 25%. Yeah, into 100, 25%. Here, 25.12%. Also 25.12% is it.
25.20, taking 25%. Okay. Here, the main thing is here. आता तुम्ही काय शिकताय? AMD, account for managerial decision. Account for managerial decision. Last two solution is look here. Last two solution. First is current ratio. In current ratio, I am telling you B company is better than A company because the current ratio is high than A company. It means आपल्याकडे अशा काही वस्तू आहेत ज्याने आपण पैसे कन्वर्ट कॅश जनरेट कर सकते हैं. The ratio is B कडे is 91% and A के पास 51% goods है. This could easily converted into cash, maybe your stock and all things. I'll swing here 1.88 cash converting assets है. But loan are cash converting? No, it's a debt. नुकसान होता है debt. The word is debt, long term debt. नुकसान, तो नुकसान जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है, कम होगा या अच्छा, then less नुकसान, less debt is better as compared to the high debt. So here less percent is 21%. That's why the comment is your comment is passed out here. A is better than, is better than B. Because less debt is better, less debt is better than high debt. And plus comment is in short and plus. Okay, and A is the 21%, debt is here. Okay, it is less than 25%. Okay, then the next one is calculation of stock to working capital ratio. Stock to working capital ratio. Okay, and here the stock to working capital ratio का formula क्या है? For A company हम पहले find करेंगे. या अभी से मैं जरा मेंशन करके रखता हूँ into 100. Okay. Stock. अब यहाँ वैल्यू ऑफ क्या चाहिए उसको? अमाउंट ऑफ स्टॉक. तो बैलेंस शीट में अमाउंट ऑफ स्टॉक दी होंगी फॉर ए कंपनी. हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टॉक? 90,000 मेंशन देयर. अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 90,000. And working capital, what are the formula for working capital? Current asset minus current liability. if तुम्हें याद नहीं हो रहा है कि फॉर्मूला क्या है तो देखो यहाँ मैंने लिखा हो current asset minus current liability. Okay, current asset minus working capital, current asset minus current liability. Then total of current asset. अब बार बार निकालने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट फॉर्मूला है. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज हियर. करंट असेट ऊपर की साइड 1,25,000 माइनस करंट लायबिलिटी 2,35,000. 1,25,000 minus
2,35,000. No mention की तुम्ही negative आ रहा है answer. Okay, no mention. Just mention in bracket. Okay, mention in bracket into 100. So here the calculation is stock 90,000 and working capital, total working capital 1,10,000 negative. 1,10,000 10,000 in negative form. Okay. That answer is 90,000 divided by 1,10,000 into 100. It's become 81.81%. 81.81%. 81.81%. Stock to working capital कितना है 81% for A company. Okay. Then for B company, same formula. Stock upon working capital into 100. What are the stock? Stock कितना है देखो for B company. B company stock is 85,000. B company stock is 85,000. Okay. And working capital, it means current asset minus current liability. Means current asset minus current asset minus current liability. So how much current asset minus current liability for B company? Look here, 1,70,000 minus 1,85,000. 1,70,000 minus 1,85,000. 1,70,000 minus 1,85,000. 15,000 negative. Don't worry, mention in bracket. It's not affected on your solution. You want just which one better company. 35,000. Okay, sorry. Stock amount is 85,000. Okay. And working capital. How much working capital is here? 15,000 in form of negative है तो मेंशन इन ब्रैकेट मैंने फॉर्मेट जब सिखाए थे उस वक्त बोला था नो माइनस साइन इज मेंशन देयर देन मेंशन देयर 85,000 divided by 15,000 into 100 it's become 566.6%. 566.6%. Then which one is best? B is best. And which one is best? B is best. Also comment is same comment like liquidity. B is better than A in stock and working capital. B is better than A in which one ratio? Stock to working capital ratio. Okay, the comment is there. Stock over. Simple comment pass करायचे. Just which one is best company as per your thing as a managerial decision. Account for managerial decision. Just managerial decision. Okay. Then next working capital is a proprietor ratio. Proprietor ratio. It means proprietor fund are divided by total asset. So find out which one is best. The higher ratio is best. Okay. Here as per the debt, lower ratio is best. In proprietor ratio, proprietor higher fund is best. Then higher ratio is best. Okay. Then for A company. Proprietor fund
How much proprietor fund? Proprietor fund means all our fund. Own fund plus loan fund less fictitious asset. तो own fund कितना है? 4 lakh. Share capital 4 lakh 70 plus here 5 lakh 70. Okay, it is proprietor fund. Less fictitious asset 10,000 means 5 lakh 70 minus 10,000. This one 10,000. देखो कौन से ले रहा हूँ मैं? ये ले रहा हूँ. कौन से? 4 lakh. कुठले कुठले घेते बघा. 4 lakh plus 20,000 जनरल रिझर्व प्लस 50,000 PNL आणि लोन फंड. प्रोप्रायटर फंड म्हणजे ओन फंड प्लस लोन फंड. आता ओन फंड मध्ये काय काय येतो? शेअर कॅपिटल, जनरल रिझर्व, फिक्टिशियस असेट, लेस फिक्टिशियस असेट प्लस लोन फंड. या दोघांची टोटल इज अ प्रोप्रायटर फंड. तर 4 lakh plus 20,000 plus 50,000 plus 1 lakh. It is 5,70,000 minus 10,000. It is 5,60,000. ऐसे डायरेक्ट केला तरीही चालणार आहे. It is the amount is 5,60,000 5,60,000. Okay, and total asset, it is total of asset. Total asset, it is a total of asset. It is 8,05,000. 8,05,000. Directly total घ्यायची खालची 8,05,000. Okay. Also I have mentioned here into 100% मध्ये असेल तर छान असतो तो into 100. Okay, it's equal to 5,60,000 divided by 8,05,000. It's equal to 69%. 69.56%. 69.51%. 69.51%. Okay, for A company. Then for B company, similar formula, proprietor fund. What are the proprietor fund for A, B company? Similar, जसं आपण इथे घेतलं तसं काय काय येणार आहे त्यात? शेअर कॅपिटल, जनरल रिझर्व, प्रॉफिट अँड लॉस अँड लोन फंड. It is 5 lakh, 6 lakh 50 and like 7 lakh 50. Okay, 7 lakh 50,000 minus 3,000. 7 lakh 50,000 minus 3,000. It becomes 7 lakh 47,000. Okay, 7 lakh 47,000 in here. 7 lakh 47,000. And total asset side ची total B company ची. The total asset side of 9,35,000. 9,35,000. 9,35,000. Okay, into 100. Sorry.